Hello guys, hello, good noon students. Welcome once again in 8th standard science in our YouTube channel the VIII Sci classes. Your chapter is 7th conservation of plants and animals. Your 7th chapter is conservation of plants and animals. In this chapter, yesterday I had explained about the migration, ecosystem, meaning of conservation and the extinct species. Due to the deforestation and the human activities, some wildlife species have no longer exist. Means वो species exist अर्थ पर नहीं करती. That means they have vanished from the earth. That means extinct species. Extinct species are those species which have already vanished from earth. यानी कि वो species जो अर्थ से ऑलरेडी गायब हो चुकी हैं. अब वो किसकी वजह से? इवोल्यूशन की वजह से, पोचिंग की वजह से, हंटिंग की वजह से, डिफॉरेस्टेशन, ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से वो स्पीसीज अब अर्थ पर एग्जिस्ट नहीं करती. दैट मीन्स द स्पीसीज विच नो लॉन्गर एग्जिस्ट ऑन अर्थ. जो स्पीसीज अर्थ पर अब एग्जिस्ट नहीं करती, अर्थ पर नहीं है. एग्जाम्पल इज डायनासोर. एग्जाम्पल क्या है? डायनासोर. अब यहाँ भी मीनिंग है कंजर्वेशन. मीनिंग ऑफ कंजर्वेशन, कंजर्व मीन्स सेव करना. दैट मीन्स अपनी वाइल्ड लाइफ, नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स को कंजर्व करना, सेव करना फॉर द फर्दर जनरेशन. दिस इज कॉल्ड कंजर्वेशन. कंजर्वेशन इज द प्रोसेस इन विच वी कांस्टेंट और वी शेप द नंबर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल स्पीसीज विच आर इन डेंजर. दैट मीन्स विच आर इन डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन. जो भी खत्म नहीं हो, खत्म होने के कगार पर है, जो खत्म हो चुकी, दीज आर द एक्सटिंक्ट स्पीसीज. Next is endangered species. As in the name, danger. That means खतरा. That means endangered species are those species which are facing danger of extinction. That means वो species जो खत्म होने के कगार पर है. That means उनमें वो खत्म होने के कगार पर है. Means extinction का खतरा फेस कर रही है. These are called endangered species. और endangered species are those species which are verge of extinction. That means जो खत्म होने के कगार पर हैं. These are called endangered species. Example is tiger. Apart tiger, this is the Asiatic lion, wildlife buffalo, Indian elephant, and tiger. So these are the species. These are the endangered species. Now we talk about the red data book. अभी book red नहीं है. The red data book, it's the book which is maintained by IUCN. That means International Union for Conservation of Nature and Natural Resource. यानी कि ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स को कंजर्व करने के लिए गाइडलाइंस जारी करती है, डेटा जारी करती है. तो ये IUCN जिस बुक में डेटा रखती है किन स्पीसीज का, जो स्पीसीज या तो खत्म हो चुकी हैं या खत्म होने के कगार पर है, तो वो रिकॉर्ड जिस बुक में मेंटेन होता है. दिस इज कॉल्ड द रेड डाटा बुक. द रेड डाटा बुक इज मेंटेन्ड बाय IUCN. दैट मीन्स इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स. एंड रिकॉर्ड ऑफ एंडेंजर्ड एंड एक्सटिंक्ट स्पीसीज आर केप्ट. दैट मीन्स इस बुक में एनिमल्स क्लासिफाई किए जाते हैं ऑन द टू कैटेगरीज, द स्पीसीज विच एंडेंजर्ड स्पीसीज and the extinct species. So this is the important topic from this chapter. Next, today last topic is wildlife sanctuary. यानी कि from the government some places are restricted for the poaching and human activities. That means where humans are not allowed. That means the place which is protected for the wildlife. And wildlife animals are protected. Wildlife animals are protected in their natural habitat. यानी कि जो एनिमल्स जहाँ वो नेचुरली रह रहे हैं उन्हीं के चारों बाउंड्री ला के एनिमल एरिया फिक्स कर दिया. वहाँ पर कोई भी ह्यूमन एक्टिविटीज बैन है और वहाँ पर पोचिंग एंड हंटिंग इज बैंड. सो दिस एरिया इज कॉल्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. दैट मीन्स वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज एन एरिया विद इन वाइल्ड लाइफ इज प्रोटेक्टेड. जहाँ यानी कि वो एरिया जहाँ पर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्टेड है. अब जहाँ पर प्रोटेक्ट होंगे तो वहाँ पर उनका नंबर इंक्रीज होगा. दैट मीन्स वहाँ पर वो अपना नंबर इंक्रीज कर सकते हैं. दैट मीन्स रिप्रोड्यूस कर सकते हैं. वहाँ पर हंटिंग प्रोहिबिटेड. हंटिंग एंड पोचिंग इज
prohibited. Wildlife sanctuary is a place where animals are protected and preserved. Protected भी रहते हैं और preserved भी रहते हैं in their natural habitat, जो उनका natural habitat है, चाहे वो प्लांट्स में, चाहे वो एक्वेटिक हो, चाहे वो टेरेस्ट्रियल हो, चाहे वो लैंड पर रहते हो एनिमल्स या वाटर में रहते हो. एग्जाम्पल है करेरा बर्ड सेंचुरी मध्य प्रदेश. करेरा बर्ड सेंचुरी ये मध्य प्रदेश में है. एंड बांदीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये है कर्नाटका में. सो दीज आर द एरिया वेयर wildlife animals are protected and preserved, and that is why conservation of wildlife is done. So that was all for today. These are the topics. On the Monday we would discuss about the national parks and the further topics of this chapter. I think Monday or Tuesday this chapter would be completed. Till then keep reading your chapter and underline the difficult and hard words for the dictation. I hope you are doing your reading honestly. Till then keep watching our channel. If you have not subscribed our channel, please subscribe the VIII Sci classes for more videos. Till then keep watching, keep learning, keep hard working, keep smart learning, and be happy. Thank you so much for watching.